बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। आज है हमारा यूनिट 1 का रिव्यू लेसन। रिव्यू लेसन का मतलब आज हमने इस लेसन में जितने भी एसएलओस पढ़े थे, जितने भी स्किल डेवलप किए, जितनी भी एक्टिविटीज़ की, उनका आउटकम जो हर एसएलओ के साथ कनेक्टेड है उसको हमने रिवाइज करना है। और आपने ये बताना है कि आपको कौन कौन सा एसएलओ समझ आ गया है और आप उसको मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। टीचर्स, इस यूनिट की एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमारी तरफ से एक सजेस्टेड एक्टिविटी है। दीज आर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। इसमें आप नंबर्स चेंज करके एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बैंक जो है वो बच्चों के साथ जनरेट कर सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनकी लर्निंग को फर्दर एनहांस करने के लिए और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। और आज की जो रिव्यू चैप्टर रिव्यू है इसमें हम तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करके आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अभी भी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड टीचर्स, आपने बच्चों के साथ ये उनकी ऑब्जर्वेशन रखनी है कि अगर वो किसी एसएलओ को लेके या क्वेश्चन को लेके अभी पर्टिकुलरली कंफ्यूज हैं तो आपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट यूनिट शुरू करने से पहले वो एसएलओ एड्रेस करना है। इधर आप वीडियो दिखा लीजिए या खुद से एक लेसन प्रिपेयर कर लें, दैट इज टोटली अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1. The first question says, choose the correct option. Choose, यानी आपके लिए कोई choice दी गई है. How many apples are shown in the figure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you are going to circle the right answer. Number 2, which arrangement of numbers shows ascending order? Now what was ascending order? The smallest number comes first. So observe the given options. Option A, B, C, इनको गौर से observe करें और बताएं कौन सी correct ascending order में है. For me, the option goes B. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Question number 3. Which arrangement of numbers shown in descending order? Option A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is not right. 1, 3, 2, 4, 5, 6. This is not right because in descending order, the bigger number comes first. So the option is B. Number 4, how many ones are in 13? 3 ones. Very good. Number 5, how many tens are there in 25 tens? How many tens? There are 2 tens. Number 6, which one is a cardinal number? Is it this one, A, B, or C? It's the option. It's the option A, 8. Number 7, which one is an ordinal number? Is it 3, third, or third? This is an ordinal number. Number 8, which one has more balloons? Option A, B, or C? पिक्चर को ऑब्जर्व करें और बताएं किसके पास more balloons है. Option C has more balloons. Number 9, which one has less balloons? So from the picture, it's option A. Number 10, 46 is dash 55. 46 is more than, less than, or equal to? It's less than. Shabash, very good. Question number 2, count the number of objects and encircle the number. So आपने दो काम करने हैं, पहले count करना है फिर circle करना है. So the easy way is to count in groups of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I make a bundle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I make a second bundle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The third bundle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The fourth bundle. So let's count the remaining. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 4 bundles of 10. 1, 2, 3, 4 and 9 single.
So the number is 49. Part B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's make a circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the second bundle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the third bundle. So these are 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bundles of 10 and 6 singles is 36. Question 3. Identify and write numbers which comes before, after, or between the given numbers. A. Before 34 is 33. B. Before 100 is 99. After 68 is 69. After 88 is 89. Between 82 and 84 is 83. And between 71 and 73 is 72. Question 4. Count and write in the form of tens and ones. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 bundles of 10 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 singles. So it's 6 tens and 6 ones and the number is 66. Question number 5. Count and tell how many tens and ones are in the given numbers. So the first number is 49. 4 tens, 9 ones. In 51, 5 tens and 1 ones. Question number 6. Write the correct place value. So let's see. 88. There are 8 tens and 8 ones. 42. 4 tens, 2 ones. 30. 3 tens, 0 ones. 69. 6 tens, 9 ones. Question number 7. Write the following numbers in ascending order. Ascending means the smallest one comes first. So observe part A and then start filling up the boxes in ascending order. So the smallest one here is 11, then 14, 21, 31, 51 and then 61. In part B, the smallest number is 3, 12, 28, 56, 57 and then 82. Write the following numbers in descending order, means the bigger number comes first. So let's see. 75, 62, 51, 30 and then 22. Part B. 82, 64, 51, 29, 2. Question number 9. Follow the instructions and circle the second rabbit from left to right and right to left. So from left to right, second, 1, 2, first and second. And from right to left, first and second. Part B. And circle the 10th pigeon from left to right and right to left. So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. And then when we go from right to left,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. Question number 10. Write the missing ordinal number. So let's see. 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1st. So this is the summary of the unit. Dear students, इस पूरे यूनिट को करने के बाद और इसमें दी गई तमाम एक्सरसाइज और रिव्यू करने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को खुद से परफॉर्म करके दिखा सकें. और इस यूनिट में हमने जितने वोकैबुलरी वर्ड सीखे थे, फॉर एग्जांपल बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मोर देन और लेस देन, इन तमाम अल्फाज को आपको इस्तेमाल करना आ गया होगा. और अब आप ऑब्जेक्ट्स या फ्लैश कार्ड्स या नंबर्स की मदद से अपने सराउंडिंग में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वोकैबुलरी वर्ड को कहाँ पे कब यूटिलाइज करना है. टीचर्स, क्लास में बच्चों के साथ इन समरी पॉइंट्स को एक दो दफ़ा रिवाइज कीजिए. हर पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछिए रैंडमली, बच्चों को पिन पॉइंट करके या बच्चों से ग्रुप्स में आप पूछ लें, जो आपको फैसिलिटी लगती है कि आपकी क्लास की रिवीजन के लिए बेहतर होगी. बट मेक श्योर आप हर समरी पॉइंट को एक दफ़ा बच्चों के साथ डिस्कस करें. आपकी सहूलत के लिए किताब में जो टीचर्स नोट दिया है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ की सजेशन है. इनको यूटिलाइज करके आप इस लेसन को मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं. और सेकेंड यूनिट को शुरू करने से पहले इन तमाम SLOs का बच्चों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ यूनिट 1 एंड टर्म 1. थैंक यू एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.